गुरु रूप संगत जी, आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी, सात संगत जी, जी आया नो। आज दा हुक्मनामा दरबार साहब तनासरी महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जियो डरत है आपना कैस्यों करी पुकार, दुख विसारन सेव्या सदा सदा दातार। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਰਹਾਓ। ਵਿਆਖਿਆ, ਜਗਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। रहाओ। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। आपकी असीम कृपा है कि हम साथ संगत के साथ मिलकर नाम जप सकते हैं, आपका गुणगान कर सकते हैं और आपका गुणगान सुन सकते हैं। आज आपने सोनिया मेहता आंटी को चुना है कि वो आपका गुणगान हम सबके साथ करें। With folded hands and bowed head, I would request Aunty to kindly unmute herself and share Maharaj's blessings with all of us. जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू आंटी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से यही अरदास है कि जो मैं कहूँ मतलब वो मेरे से जो कहलाना चाहें कहलवाएं, और मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जो गुरुजी की जो गुरुजी ना चाहें। संगत जी, गुरुजी हमारे महाशिव, वो अपने संगतों का इतना ध्यान रखते हैं। He is with you all the time, every time. हमें महसूस हो ना हो, कई बार नहीं, हम अपनी डे टू डे चीजों में उलझ जाते हैं, बट अगर आप सिट बैक एंड एक बार मिनट भी सोचें दिन में, यू विल रियलाइज कि कितनी चीजें जो इतनी आसानी से हो रही हैं, जो इतनी स्मूथली हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं। कितनी बड़ी शक्ति है एक हमारे साथ जो ये सब करवा रही है। Sometimes we tend to take it for granted, but he's there. And वो एक एक गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। He's like this big, like father, who just keeps his brood. सारे बच्चे अपने बाहों के दायरे में उसमें ही रखते हैं हमेशा। 24th को मेरा काफी लंबा, I had 2 MRIs to do some health issue, actually not even health issue, some investigations just के for further clarifications के लिए, just to rule out and conclusively, I suppose, I hope and pray के it'll be all clear. But उस
point पहुंचने के लिए this MRIs had to be done. One was and काफी लंबा था वो, because back to back दो थे. एक तो खैर scheduled cervical का MRI था, which is a very long satsang. It's a bit of a वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, why this became a botched up case, physio के time ये कुछ गड़बड़ हो गई थी, and which was my fault really. I went to a physiotherapist without consulting a neurologist. Actually मुझे पता ही नहीं था कि neurologist के पास I should have gone. I never related it that way because उस वक्त कोई ऐसा issue नहीं था. It developed later. So anyway, वो just, and doctor, just to avoid surgery, has put me on a collar and a lot of other things. So hopefully now I'll be off it. ये almost 10 months हो गए हैं, because my neurologist, when I finally went to a neurologist, he felt that I had been through enough of surgeries, one thing leading to another, and he felt, conservative approach karte hain. So uske tha that MRI, and then another cropped up because mere har 6 months test hote hain for review. Ever since I've had, I was diagnosed with cancer in December 2015, and uski fir I had a mastectomy in January 2016, followed by chemo and all that. So since then, every 6 months, ye tests hote hain, and then I have to just go and, I just go and consult my oncologist as well as the cardiologist, because all these tests have to be done. So, so in the process, something was showed up this time, and they were not sure, but they felt so for that cardiac MRI bhi karana tha. So back to back, these two MRIs was a lengthy process, almost 3 hours total. Little over 3 hours total हो गया था, मतलब एक के बाद एक जो हुआ था. And वो IV, वो cannula भी लगाते हैं आपके हाथ पे to inject the contrast dye and some other medication and all that. So in fact, my hand is still stiff. So वो सब कर करा के जब मैं वापस आ रही थी, I got it done in Gangaram Hospital. So जब मैं वापस आ रही थी, I just, my phone was on silent. Or jaise hi I stepped out and I got in the car, I put on my phone. And I see a missed call from Subodh uncle. So I called him, and this is on 24th, Wednesday. Yeah. And I was feeling at that point very tired, very stressed. And I think wo jo medicines andar jati hain, they also, kind of play up on your mood. Perhaps a bit of mood altering. And और मैंने 5 साल पहले टेस्ट कराया थे ये MRI वगैरह. So वो भी हो जाता है. I guess this time my body, I think, wasn't taking it too well. You get older every as the year passes. So and in that, a little bit of tired, a little kind of low, kind of just out of sorts. Us frame of mind mein, I saw this missed call and I called back. And uncle told me, Aunty, aap satsang karenge Saturday ko. And as I was saying yes to uncle, the thought came in my head very clearly that this is
see, this is Guru. It's nothing is a coincidence. है ना? Guruji कहते हैं ना, nothing is a coincidence. It's all meant to be. And this was, I think, Guruji's way of just boosting me up. Okay, like a morale booster, and showing his presence, and then the timing of it. It's the timing. Guruji ka jo bhi hota hai, it's, you know, that's when it comes very clearly in your head that this is something special and not an ordinary happening. It's the timing through that. And so that's how I'm here today. And Jai Guruji. Guruji has ways of, you know, एक और incident मुझे सत्संग उनका 2010 में, I remember, must be March, April, I was for some reason very stressed out. कुछ कई चीजें थीं जो मेरे से उस वक्त, I think, कई चीजें हैंडल करनी पड़ रही थी जो मैंने कभी नहीं करी थी, and I was just generally not sure. वो क्या होता है, stress कहाँ से आता है जब आप sure नहीं होते about what you're doing. You know, once you know what you're doing and you know you're doing the right thing, you're confident. But when you don't know, it's when there was a lot of stress and there was a lot of things to be handled at the same time. Social, बहुत कुछ था going on. And I, one day, just I was sitting and I said, Guruji, and I was missing Guruji so much. I said, Guruji, I really wish aap hote. Matlab, I just want, we know Guruji is around us, we know everything, but ek wo, you know, वो अलग तो है ही, स्पेशल तो है ही जब आप गुरुजी के दरबार में होते हो, गुरुजी आपके सामने बैठे होते हैं, फिजिकल प्रेजेंस. इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. इट इज. And that, you know, you feel it, and once you've experienced that, तो वो ये to experience that same feeling and that same thing in his nirakar roop, एक time laga to move from that to this for us, for me especially. And I was just saying, Guruji, I just wish you were here, and I just, I just wanted to, कि मैं उसी वक्त ना अगर हो तो मैं दिल्ली, I was in Middle East, कि मैं उसी वक्त दिल्ली की ticket, you know, करके I would have come and just come to the darbar. But, and then what happened? Just see, Guruji कैसे सुनते हैं. And I went to wash my hands. I was going somewhere and I just went to wash my hands and just, you know, comb my hair kind of thing. And there I was wearing a wide neck wali na top pehni hui thi. And what do I see? On my collarbone, a big red mark. For a second, मुझे लगा कि शायद ये कोई insect bite होगा, but then I said, insect bite यहाँ कहाँ, कैसे? And फिर मैंने थोड़ा और नजदीक आके देखा, you know, ऐसे गर्दन थोड़ी आगे करके, लीन करके मिरर की तरफ जब देखा, and संगत जी, it was a distinct Om, so clear, so clear. I couldn't believe it. I mean, मतलब मैं कितनी देर आगे ऐसे 2-3 बार मैं आगे ऐसे होके देखती रही, and it was. फिर मैंने, I clicked a photo of that, and I think I just came and sat in my room, and I think I was in tears because of the fact that Guruji had heard and कैसे उन्होंने अपनी presence दिखाई, or not only presence, but then, you know, he's there with me. Nothing can be closer to you, but it's not कि कोई butterfly eye या कुछ ऐसे, but it was here on my collarbone. It's just telling me कि I'm right, like with you.
all the time, every time. And such a beautiful, divine, I think, experience and darshan. It was a huge thing. And बहुत दिन रहा था, 6-7 दिन रहा था that Om. Guruji, आपको, it's a question of connecting. Connect हम सब करते हैं, but गुरुजी एक एक चीज सुनते हैं, एक एक चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं. कभी हम मैसेजेस कैच कर पाते हैं, कभी हम नहीं कर पाते. एंड 2011 में बड़े मंदिर में, अब इसका तो आज तक मुझे आई एम स्टिल, यू नो, मेरे को हर वक्त अपने आप को पिंच करना पड़ता है कि यस, डिड इट हैपन. आई हैव टू फिजिकली गो एंड सी दैट थिंग एंड से यस, it happened, it happened. बड़े मंदिर में 2012 में, 2011 में मैं आई हुई थी दिल्ली, और मैं सीधा बड़े मंदिर गई. एंड एक्चुअली नॉर्मली मैं मंडे को वहां से आती थी, मंडे नाइट की फ्लाइट लेके, आफ्टर अटेंडिंग सत्संग वेयर आई वाज स्टेइंग इन मिडिल ईस्ट. और वहां से सीधा फिर I've come to Delhi Tuesday morning, and then invariably Thursday I would be going back. तो क्या होता था कि वो जो 2 दिन होते, मंदिर नॉर्मली बंद होता है, ट्यूसडे वेडनेसडे बंद होता है नॉर्मली, क्या होता है. And effort used to be कि first thing, you know, तो one, मैं सब काम करके गुड़गांव से वापस आ रही थी दिल्ली, and it was a Tuesday. एंड मैंने ऐसी ड्राइवर को कहा कि नहीं, बड़े मंदिर से होते चलो. तो कहते जी वो तो बंद है. ऐसे नहीं, जो भी है मैं बाहर से ही माथा टेक लूंगी. तो वहां पे जैसे मैं पहुंची तो माली भैया बैठे हुए थे गेट पे, छोटा गेट खुला था, नॉट द मेन बिग गेट, द स्मॉल. तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा मैं अंदर एक चक्कर मार के आ जाऊं परिक्रमा करके. तो पहले ना कहने लगे, फिर ही सेड हाँ ओके आप जाओ. तो मैं पूरा परिक्रमा करके बाहर आ रही थी, तब तक मेन गेट खुल गया था. मैं वहां से बाहर आई. मैं छोटे गेट से बाहर आ रही थी, तो माली भैया ने मेरे को डायरेक्ट करा उधर मेन गेट की तरफ. तो मैं वहां से बाहर आ रही थी, एंड आई क्रॉस्ड टू गो टू, उस वक्त जोड़ा घर, मेन गेट मतलब वो सामने ही होता था, जहाँ वेरी नियर टू द गेट्स, नॉट, अभी तो नया बना है ना, पहले वो वहीं होता था. तो एंड उस दिन कोई था भी नहीं, मैंने तो खुद ही वहां पे अपना चप्पल उतारी थी, एंड मैं वहां गई. और as I was walking I saw somebody standing at the corner of the eye, say somebody tall standing. मैं क्योंकि वेट कर रहे होंगे, मैंने मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और मैं गई, अपना चप्पल उठाई, वहीं पे वो पानी का एक पर्थ, थोड़ा हाथ धो के गाड़ी की तरफ जा रही थी. गाड़ी भी बिल्कुल पास ही खड़ी थी. एंड सडनली जैसे मैं जा रही थी टुवर्ड्स द कार, आई हर्ड अ साउंड. पहले तो मैंने इग्नोर कर, then again I heard, so it seemed as if somebody saying aunty. So I turned, I said hanji, and I saw a person tall wearing a gray safari suit, salt pepper hair, must be in 50s, very tall, very fair, looking like Kashmiri jaise hote hain, very tall fair person, pink cheeks, that kind of complexion. And I turned and I pointed towards me. I said, Hanji uncle. So he nodded his head as if saying, कि हाँ मैं ही बुला रहा हूँ. So I walked 2 steps towards the person standing, and he says, कदों दा आख रहे, सुनदी नहीं है, खलोया है, कदों दा खलोया होया. My mind went blank. मुझे कुछ नहीं उस वक्त
just total blank. And I took another step forward, and उन्होंने मुझे एक हाथ में कुछ दिया. I took that and I turned. And I realized कि मैंने उनको thank you भी नहीं बोला है. Because those days, शुरू में, ये बाद में सब बंद कर दिया गया था. Those days कई बार क्या होता था, बड़े मंदिर के आगे कोई आंटी अंकल खड़े होते थे, कभी कोई गुरुजी का स्वरूप या कुछ ऐसे देते थे. So I thought maybe it's one of those things, and I turned and I suddenly struck me कि मैंने thank you तो बोला नहीं, and I turned back. There was nobody there. I was shocked. I said, suddenly कहाँ गए? I went to माली भैया. I said, वो जो अंकल यहाँ खड़े थे लंबे से, वो कहाँ है? कहते नहीं, कोई भी नहीं था. I said, क्या बात कर रहे हैं? ये उन्होंने मेरे हाथ में दिया है. कहते नहीं जी, यहाँ तो कोई नहीं है. Very straight. I said, अच्छा मैं अंदर एक चक्कर मार के आऊं. I looked down the street, nobody. I said, अच्छा मैं अंदर, कहते हैं अंदर कोई भी नहीं गया. I said, फिर भी मैं एक चक्कर मार रहा हूँ. तो he said, अच्छा. मैं पूरा दोबारा पूरा चक्कर मार के पूरी परिक्रमा करके आई. फिर मैं ऑफिस की तरफ गई, वहां भी ताला लगा हुआ. मैंने सब जगह देखा. I couldn't. मैं गाड़ी में बैठे ड्राइवर से पूछा, ऐसे तुमने देखा मैं अभी बात कर रही थी किसी जैसे नहीं? तो कहते हाँ जी, आप बाहर आए फिर आप अंदर चले गए. आई सेड वो तो मुझे भी पता है, बाहर ही अंदर चली गई, बट मैं बात कर रही थी. बट somehow it's then the penny dropped. तब I understood क्या हुआ है. And it was, and then I couldn't stop shaking. I couldn't believe, even now, there's something, all I can say is शुक्राना 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 गुरुजी. वो क्यों क्या, I don't know. शायद मुझे कभी भी नहीं, कोई वो डॉट्स कभी कनेक्ट नहीं होंगे. I wouldn't know what was it, but I am eternally utmost grateful to Guruji. शुक्राना गुरुजी का. वो जो ऐसा कर जाते हैं कि आप I think, you know, sometimes you are so overwhelmed. इतना overwhelming हो जाता है experience that you get emotional, extremely emotional, out of sheer happiness and the sheer experience जो आप experience कर रहे हो उस चीज से. 2013 में गुरुजी, मैं बड़े मंदिर आई थी. Again, it was a Sangat day, but that evening was my flight, so I could not attend the satsang in Bade Mandir. So I had come Matha tekne, but I was fortunate enough to be allowed, gate khula tha, so I could go in. And because just दोपहर का time था, late evening, अब थोड़ी देर में, but I had to go to the airport, so मैं ऐसे ही बाहर से ही मैंने सोचा था माथा टेक लूं, but since gate was open, I went in. तो गणेश जी के आगे माथा टेका और फिर समाधि के आगे उन दिनों जो जोत जो चलती थी, अभी बाहर है ग्लास डोर, जो स्लाइडिंग ग्लास डोर है उसके बाहर है, पहले अंदर होती थी. सो अंदर थी, ग्लास डोर बंद था, और मैंने बाहर से ही झुक के माथा टेका. और जैसे ही मैंने ऊपर नजर करी तो जोत के अंदर very clearly, like a film, I saw Guruji in the rock star avatar there, few seconds, and then Sai Baba, few seconds, and then Guru Nanak Ji. And again, and I was stunned and I thought I'm really hallucinating. ये क्या हो रहा है? So I got up और मैंने
समाधि का परिक्रमा करा, फिर वापस आके माथा टेका. And then when I looked up in the jyot, I saw only Guruji. And I kept looking for some time, but there was no slideshow that time. It was just Guruji there. Jai Guruji. So Guruji, and I think all these experiences were there to just boost me up, strengthen me. So Guruji has his ways, वो कभी आपको messages देके answers आ जाते हैं आपके पास, उससे आपको strength मिलती है. कभी dream दर्शन्स में, कभी ऐसे, कभी through books. Books have also come to me over this last 12 years, I can say, ke, at the time that I've needed to read them. Once this book, I was at a bookshop in USA, in Atlanta, and I was just browsing around, और एक book caught my eye. उसका title था ऐसे letting it go. मैंने निकाली, थोड़ा पढ़ा, front page, last, at the back of the book, वापस रख दी. Went around, came, फिर वो book. 2-3 बार ना it kept catching my eye, that book. And in fact, वो दो shelves में, अलग-अलग different shelves में पड़ी थी, same like copy of that. So it just kept catching my eye. Finally, I said, I think I'll just take it. So उसमें जो content था, I think वो इतना बाद में जब मैंने पढ़ा, that was okay. I felt was not so important as that message of the title of the book, letting it go. Sometimes we have to do that in life. Certain things, sometimes grief, sometimes some other issues. So, which is also part of, I think, broadly comes into the category of forgiveness also, forgiving others and yourself, so it was just this, I thought it was that point, it was really needed. And this is how, over time, the books have come to me, like Laws of Spiritual World, Fakir, the trilogy of Fakir, the journey continues, the journey within. And this talks a lot about intentions. Niyat pe is pe bahut reference hai aur bahut explanations hai, which is very good. And then this another book by Ruspe Barucha, Om of All Things. And then, of course, baad mein I came to know that Guruji had also said कि ये पढ़नी चाहिए. And also he said about Autobiography of a Yogi by Paramanand Yoganand ji. ये book मैंने 1980 में पढ़ी थी. And that time it had left a big, impression on my mind, that this book. और अब मैं उसको दोबारा पढ़ रही हूँ. And then later when I came to know that Guruji used to say कि ये पढ़ा करो, तो I was very happy कि मैंने पढ़ी हुई है ये book. And so these books also sometimes, see, देखो हम सब संगत हर different तरीके से connect होती हैं. कोई मंत्र जाप तो खैर हमने करना ही है, सब ने करना. कोई शब्द से connect होती हैं, कोई, these are supports. They are not the main thing. The main thing is mantra jap. But these are all to further your understanding, and when you're on this path, the spiritual path, journey, these books are for that. But the main thing is Shabads. Hamari connectivity is through Shabads. Our main thing is
मंत्र जाप, जो गुरुजी ने हमें मंत्र दिया है, मंत्र जाप. And that is, this is the all powerful मंत्र जो, एंड वो कहते हैं ना, जब आपको पूर्ण गुरु मिल जाते हैं, और ये तो महाशिव हैं और उनका दिया हुआ मंत्र है. सो this is the ultimate, and there's a lot of power in that. But there are other aspects that bring us closer. These books, messages, darshans, and and these are ways of Guruji showing his presence to us also. जैसे ओम बन गया कॉलरबोन पे, जैसे दर्शन दिए उन्होंने बड़े मंदिर. there are many more darshans in बड़े मंदिर, but अब मैंने just 2 पिक करे, because सारे तो अभी नहीं सुना, नरेट कर पाएंगे. since 2016 में, when I was undergoing chemotherapy, तब अप्रैल मई के महीने में, I remember that 3rd and 4th chemo were very bad. मतलब the reactions, उसके side effects जो हो रहे थे वो काफी intense थे. And by then summers, दिल्ली की summer शुरू हो जाती है, and ACs were on, दरवाजे बंद, खिड़की बंद, और उन दिनों में इतना नींद भी नहीं आती. First casualty was sleep. नींद आती ही नहीं थी. रात को 2 बजे for I think 6-7 nights, वो जो chemotherapy, I used to have it every 21 days. So middle के जो days होते हैं ना, that were the worst. And then, so those 6-7 days, every day, a butterfly would come, yellow butterfly, hover around my bed, 2-3 बार ऐसे चक्कर काटने, मेरे सिर के ऊपर ऐसे hover करना, और फिर गायब. Because कहाँ से आ सकती है बटरफ्लाई रात के 2 बजे? दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब बंद. एसी चल रहा है तो ऑब्वियसली सब बंद ही होता है, ना कमरे में, बंद कमरे में होते हो. And I remember, and I used to just smile, and I think मेरी रात बाकी की ऐसे ही कट जाती थी, यही सोच के कि butterfly has come, and that boost, एक वो अंदर से you get that sense of, what do you say that word, just it boosts you up, your bit of थोड़ा सा joy आपके अंदर आ जाता है. That feeling of joy, that feeling of being uplifted, that feeling आ जाती है, उल्लास जो होता है. So this Guruji he's so kind and so loving, so caring. आप बताएं. इस अभी पूर्णिमा में, this in July, मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो रास्ता उन्होंने आगे से डाइवर्शन करके पीछे से कोई एक रास्ता था कच्चा, थोड़ा सा कच्चा पक्का, ऐसे करते लंबा सा करते 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 एक फार्म हाउस, वहां पे पार्किंग थी. वो करते करते ऑलमोस्ट हम टी पॉइंट तक ही पहुंच गए थे. वो फार्म वाज वेरी क्लोज टू द टी पॉइंट, सो व्हिच वाज गुड. वहां पे सडनली आते हुए आ रहे थे हम पार्किंग की तरफ, हल्का सा कच्चा रास्ता था थोड़ा, फिर वो जरा सा ज्यादा फर्म, वो भी मिट्टी रास्ता था, पक्का तो नहीं, बट वो जरा ज्यादा फर्म था, ये जरा उबड़ खा. तो क्योंकि गाड़ी ऐसे जंप मार रही थी, तो आई जस्ट उस झटके से आई टर्न टू द राइट,
एंड जैसे ही मैंने टर्न करा, आई सॉ कोने में उधर एक ड्रम था दूर, वहां पे पीकॉक, इतना बड़ा पीकॉक बैठा हुआ, इतनी लंबी उसकी टेल. एंड I saw and I said, oh, how lovely peacock. And then it struck me. I said, oh, and Jai Guruji, I mean, to sight it like this, when I'm intending to go on way to Bade Mandir, on Guru Purnima, I think it was a very beautiful thing to happen. Very beautiful. अब मुझे लगा कि मेरे दर्शन तो यहीं हो गए. It was like that. Guruji has his ways of showing presence in so many different forms. If we catch it, very good. If we don't, he'll do it again. ऐसी बात नहीं है. आपकी अगर आप दिल से उन्हें बुलाएं, आपकी नियत आपकी साफ हो, आप दिल से बुलाएं, तो क्यों नहीं? Of course. और वो मैसेज लास्ट ईयर, मैसेजेस भी इतने ब्यूटीफुल तरीके से देते हैं. कभी तो कई बार उनको यकीन भी नहीं होता कि रियली हो रहा है ऐसे. What happened at Janmashtami last year? तब मंदिर बंद थे. So बाहर से ही माथा टेकते थे, कार में बैठ के 1 मिनट कार रोक के, कार में बैठे बैठे ही माथा टेकना. और मैं तो वही करती थी, मंत्र जाप करना, जय गुरु जी, और बस ज्यादा देर रुकने भी नहीं देते बिकॉज कई गाड़ियां आती थी. बट उस दिन जब हम गए तो फॉर्चुनेटली वो 3-4 मिनट का गैप, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का गैप मिल गया. आगे की गाड़ी कोई थी नहीं, वो चली गई थी, पीछे अभी गाड़ियां आई नहीं थी. So that time, so I could roll down my window, and I did that, and तो मैं वही ऐसे रोल करके हाथ जोड़ के I was just saying my prayers, and एक छोटी सी cow, young cow comes and मेरी तरफ पहले तो बाहर से देख रही थी, और फिर उसने पूरा सिर अपना अंदर कर लिया and kept looking, with the beautiful eyes, and kept looking. And मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि मेरे पास था भी नहीं कि मैं क्या दूं ऐसे, I couldn't even offer anything. And I felt, and I just started doing mantra jap, और वो खड़ी रही. I don't know, male, female, जो भी, the cow was there, and like a young adult. And then of course 2-3 मिनट निकल गए, and then of course सेवादार अंकल said गाड़ी आगे कर, तो ड्राइवर आगे करने. I said wait, रुको इसको लग जाएगी. तो मैंने फिर उसके आगे हाथ जोड़ा, and I said please अब आप जाइए, and जय अब आप जाइए. एंड जैसे उसने सुन ली और बाहर करा, एंड ही वॉकड ऑफ, और मैंने खिड़की ऊपर करी और हम लोग वहां से आ गए. अब सुबह घर में मैंने ऐसी थोड़ी पूजा करी थी, और तब गुरुजी और तिलक लगाया था. जस्ट स्मॉल शॉर्ट सत्संग घर में करा था, जस्ट अबाउट हाफ एन आवर, एंड भोग एंड ऑल दैट. तो जब मैं वापस आई और आके मैंने फिर वही माथा टेका अपने मंदिर में, समथिंग कॉट माय आई, एंड तिलक ऐसे कि क्या है, जो गुरुजी के वो जो येलो स्वरूप नहीं है, गुरुजी के येलो चोला में, उसमें जो क्रॉस करके लेग उनकी एक है, तो पैर ब्लैक वो चप्पल स्लिपर पहनी हुई या स्लिप ऑन जूती पहनी हुई वो दिखती है थोड़ी, उस पे भी तिलक था. एंड आई लुक्ड क्लोज, so clearly in that, there was
like, young Krishan ji, tilting his head in this, tilting his head and looking, one of those very cute young Krishan ji, head tilt करके ऐसे देख रहे हैं. So clear. And जब मैंने माथे पे देखा, and I could see Shivji, kind of, I don't know, it struck me as if it's in that Tandav, that kind of a thing, pose, but very clear. So जब मैंने इस पे देखा, I had a sense, somehow, I don't know, कई बार वो ख्याल आपका आ जाता है, what is it, telepathy? I don't know, but I had a sense that I knew that before they could tell me, I knew my daughter-in-law is pregnant, and I had a very strong feeling that going to be a boy this time. But when I saw that, I also knew that there would be some issue. But it will be there, but it'll go. So clearly, this whole thing came in my, and sure enough, इन्होंने तो मुझे बाद में बताया, बच्चों ने, a month later, they told me about the pregnancy. And then 3 months before the baby was due, doctor spotted something in this the ultrasound, yeah, they spotted the technician, but then later it was, they mistakenly felt they said something about the, the growth of the baby. They felt something, but it was, when they did that again, it was perfectly fine. Nothing was there. It was just, the technician had, I don't know, just done had interpreted the whole thing wrong. And this whole thing came to pass. And when I came to know about this, that such a thing is the first time before the second, before the test was repeated. And I said, no, kuch nahi hoga. It'll all be fine. And sure enough, it's all fine. Everything was okay. 4 months later, 3 months later, baby was born, nice and healthy, everything. Is now about 5 months old. Shukrana, Guruji. Anantam, 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 Shukrana. And this has been my very first experience. Telepathy pehle bhi hoti hai. I have some strong 2 satsangs regarding that, but this has been through images. And I think ye thought bhi Guruji dalte hain. When you sight it, and even today, I wonder, how could I think in that manner कि ये इसकी representation ये है और इसका मतलब ये है. I don't know. ये सब गुरुजी की करनी है, उनकी लीला है. These are at Guruji's, these are those very special experiences with Guruji, which only reflect one thing, that Guruji is with us every minute, every second. Nothing is a coincidence, and Guruji is there giving us kitna limitless love. He cares, he shows his presence. Just imagine, itni sangat hai, sari sangat ke paas itne sare satsang hai. Look at how much blessings are coming our way. Kitna bless karte hain Guruji. और हमें क्या है, गुरुजी हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मंत्र जाप करो, संगत जोड़ो,
कई बार क्या होता है, कई लोग आते हैं आपके पास, कोई अपनी they have some problem or something, they want to seek. They say na, people will come to you for help or advice or kya karna hai, they feel. But the only thing, you have to just tell them, take them to him. Once they come to him, he'll take care of them. All we have to do is bring them to him. That's all our role is. Nothing more, nothing less. Just bring Sangat Jodo. Bring them to him. Then and once they come to Guruji, he takes care of them. Our role is over. Guruji is our Mahashiv. He is सब देवों के देव, Mahashiv. वो कहते हैं ना, he's the one, I read somewhere, he's the one who makes thunder roar. And he's the same one who hears a butterfly sigh. सब कुछ जानता है, सब की सुनते हैं. He blesses everything, blesses the entire universe. Our pets, our family, our home. एक आ जाता है, सब bless हो जाते हैं. Things, everything. बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुजी सबसे. He is benevolent, merciful, all loving. Bas, we just have to be good devotees. Banda banja. That is what Guruji used to say, and that is what we have to strive for. वो हमें करना है. और ये 3 शब्द मैं हमेशा ये कहती हूँ, but इन शब्द में सब कुछ है. सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जो मांगे ठाकुर सोई सोई देवे, संगतां दे कारज आप खलोया. जय गुरु जी. संगत जी, मैं फिर कभी मौका मिला तो और सत्संग आपसे जरूर शेयर करूंगी. मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना. थैंक यू सबोध अंकल. थैंक यू अनु आंटी. शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी.